खजाना प्रभु यीशुओ कहो का तुम्हें पोता हारू स्वर्गीय खजाना एकठा कोआ जे जगाम कीड़े न काटती नाशना वेता अन जा चोर आवीन चोरी ना जाता जा तुमा खजाना हाय ते जगाम तुमा चित बिरे माँ पावस न बोईस्या तुमा जीवना खजाना कहाँ हाय आवा वसावी भाषाम कार्यक्रम उनाजी जीवना खजाना स्वगोठे माने जाया बजा जीवन गोठे उनाये कार्यक्रम पेल्ला उनाया भारी हारो एक गीत होने जा जीवन पाऊ गोया जीवा जीवन विश्वा होने जा जीवन पाऊ गोया जीवा जीवन विश्वा होने जा जीवन पाऊ गोया जीवा जीवन विश्वा होने जा जीवन पाऊ गोया जीवा जीवन यीशु गुरु आपे विश्वा होने जा जीवन पाऊ गोया जीवा जीवन विश्वा होने जा जीवन पाऊ गोया जीवा जीवन दाधाने बाई हो
भरपूर जीवन आपनार ईशुदेव तम्हान आजरो वसावी कार्यक्रम मार्फतो बरकत आपे। परमेश्वरा कती मटी दया ने कृपा हाय का जेथी यापू तिया पवित्र वचने वसावी बोनेम उनाई रे खरो ने। जो तमी एजू हुती देवा वचन बराबर उनाये ना तो उनाना जरूर हाय। आमू तमी एक गीत उनाये वे जी तम्हान गम्यो वे। खरेखर आपू परमेहेरा आभार मांजी केव का आपू को बठो देवा वचने उनाते आंडी तक जिंदगे वारे गेड़ियो वार नी मिले जेथी आपू समयान पारखूजी केव का वखत नबला आहाय। आजो दुनिया बल बलिया बिना तमी हाली रिये ई काई देखावे तम्हान खबर हाय का ई ता देवा आवनु पाहो हाय। ए चेतवणी आपे जेथी आपू देवा वचने उनाना हमेशा तियारे जी का जेथी आपो बरहा देव मी मजबूत बने ने नबल वखत मी आपू फाचे पोड़जी ने। केव का दाधा सेतान आयो जगत मी फूका सिहा गाउन सत्या वाटमी चालनार दरेक देवा पोयरहान देवा वाटमी थी ने जाइन फाड़ी खाना हारून तो बाहरी ज मेहनत करिया जेथी तमी तमा बरहा प्रभु मी राखा केव का तो तमा रक्षण कए। जो तमी ढीले हाय तो जे वाय चूड़ा आरी चाड़े पोड़ी जाते तेव सेतान जात जातरिया लोबामण्या वस्तु तमा आगो लावी जेथी तमी छेतराते नखी। याद राखा परमेश्वरो आदम ने हवान काय कोई न भलो ने बूंडो जाना चाड़ा फल तमी खाते नखी केव का जे दिहो तमी खाहा तेज दिहो तमी मोहाने मोहाज। दाधाने बायो आदम ने हवा सेतना भूलमी पोड़िए ने फल खादो ने देवा वचना आज्ञा तोड़ी ने परिणामो जगत मी मोत आलो। कतो मोटो परिणाम तेवी ज बाबत आजो तमा जीवन मी बनना घणिया शक्यता रहीन्या हाय जेथी तमी देवा वचन मी स्थिर बना। जो तमा विश्वासा मूले ऊंडे रोपाने हाय तो सेतान तमान जरा पण डगावी हे के नी पण जो तमी नी एव का नी तेव परिस्थिति रेहा तो तमी हेल्लाई थी तिया मार्ग में आवी जहा। दाखला तरीको एक सामान्य बात जावो का सेतान केवी रीतो तमा उपयोग को एहने पाप मी पाड़े है। दादा जो तमी प्रभु मी वृद्धि पामी रिये सुख शांति थी देवा नीति ने नियम परमाणु चानी रिये ती बदत सेतान जाए का आय व्यक्ति का हेती कुटुंब माँ कोई न चाहतो ना तो आय परमाणु तो योजना बनावी है के जो तमी हरो ना पीते ताहा अनेक व्यक्तिया द्वारो सेतान कवावे का लेतरा आजो एक लोटी पीने हेती नखी पीता ने हेती आफू विचारते का मान कड़ो हालतो ना जेथी एक लोटी हरो पीनाम काय वांदा ने आफू पी नेते इह में सेतान फावी जाहे आफू निष्फળ जाते केव का देवा वचन में मजबूत ना माटो दादा आपो कुटुंब में आय परमाण घणो हाय जेथी आपू सेताना आथानी बनजी पण देवा मार्ग में आवजी का जेथी भरपूर जीवना अनुभव कहेक जी। प्रभु यीशु कहे का आवा ने भरपूर आनंद ने शांति मेलवा केव का माय जीवन शांति ने आनंद अपनार परमेश्वर हाय। दादा ने बाय हो जो तमी आजो एजूपन सेताना काम में हाय तो ईशुआ नाम पी सर्व दुष्ट बाबत छोड़ी दिया ने ईश्वरी शांति मेलुना देवा वचन वसावी भाषाम उनाते रेजा। माय तमा माटो जरूर प्रार्थना कही पवित्र शास्त्र बाइबल नवो करार में 5मो पुस्तक प्रेरितों कृत्य 30 अध्याय 3 ने कलम 1 थी 10 ता ए उल्लेख अनामाला का पीतर ने योहान नामरा प्रभु यीशुआ बेन चेला यरूशलेम शहर में आलना मंदिराम प्रार्थना को अना जातना। यरूशलेम मंदिर घणो मोटो अतो हवे वात ए वहाय का मंदिरा बा आगोल अमुक लोग रोज दी हेक लेंगड़ो महान उचकीन लावतना
ને તે મંદિરા બા આગોલ બીખ માગના હાरून બહાવી રાખતના. બોપરા લગભગ તીના ગાલા વેના આલના. તે વખતો આય બેનું ચેલા મંદિરની પ્રાર્થના કોના જાતના. પરંતુ એકદમ બેનહું નજર હલો લેંગડો ભિખારી આપો પોડી ને જેથી ભિખારી મનમી મલકાયા. પરંતુ અહીંયા એક અજાયબ ઘટના બને. દાદા બેનું ચેલહો ભિખારિયાન એવ કયો કા આમાં પો હોનો કારૂપો ના, પરંતુ આમાં પો જી કાયા હાય તી આમી તું આપતા કા ઈસુ ખ્રિસ્ત નામથી તું ચાંતા વે ને તી હો તિયા જીમણ્યા આથ તે ઇન ઉઠવ્યા ને તિયા ગુઠણહામ જોર આલો ને તો ચાનના ને કૂદના લાગ્યા ને જીવતો દેવા સ્તુતિ કરતા તો બેનું ચેલ્હા આરી મંદિરામ ગોયા. લેંગડો ભિખારિયાન સાજાપણો મિલ્યો એ બિના કોઈ માન્યમ ની આવે. તે વતી કેવ કા લેંગડો માહું જન્મ જાતથી લેંગડો હતો જેથી હારો વેના શક્યતા રહેતી ના. પણ અહીંયા ઈશુવા ના મેં સાજાપણો મિલ્યો. દાદા તિયાન કોઈ દવાખાનો કાહેતી કોઈ બગતાયા જાનું પડ્યો ના, પરંતુ દેવા સામર્થ્યમી તો ચાંતા વિયા. દાદા આજો પણ ઘણે ભાઈ બેન દેવા સામર્થ્ય અનુભવ કરીએ. કેવું કા જો દેવા આધીન અનાદિકાળથી હતા તો આજો કાનોને હાંદાય પણ ઈંડા પવિત્રને ન્યાય દેવાય. દાદાને બાઈ હો તમે ખરી શાંતિ મેલું ના માગતે કા તો આમાન કાગળ લેખજા. આજરો પ્રોગ્રામ દ્વારા તમે જી કાંઈ બાબતુનાએ તી તમા જીવનમી યાદ રાખજા ને જીવતા પરમેશ્વર પો સરદાર રાખજા. તો તમાન ગમે તેવી પરિસ્થિતિથી છોડાવના તૈયાર હાય. કાર્યક્રમ બાબતી વધુ માહિતી મેળવના માટે આમાં સરનામો હાય જીવના ખજાના, પોસ્ટ બોક્સ નંબર 2036 ફતેહગંજ વડોદરા, પિનકોડ નંબર 390002. વેબસાઇટ હાય radio882.com. ફોન નંબર હાય 9429375628 9429 37 56 28. હાજર તો ઈસુ નામો માયે કહું ચાનતા વેજો. તો તે ને ચાંતા વે આક્યો તિયાન. વિસવાહો ને જા જીવન પાવું બોયા જીવા જીવન. પ્રાર્થના મેં કરો જીવને પાવું બોયા જીવા જીવ.